Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, respected management of Zabis University, respected deans, head of departments, faculty members, and dear students. Assalamu alaikum. I am Harim Siddiqui, Assistant Professor, Student Affairs Advisor, and the Master of Ceremony for today. It is my immense pleasure to welcome you all to the awareness seminar on protection against harassment at the workplace, organized by the Anti-Harassment Committee, Zabis University, Karachi campus. It is an honor to have distinguished guests at Zabis today from the Federal Ombudsman Secretariat for Protection Against Harassment, the Human Rights Commission, and our academic fraternity. On behalf of President Zabist, I welcome the keynote speaker, Ms. Fauzia Waqar, the Federal Ombudsperson for Protection Against Harassment of Women at Workplace, and our special guest speaker, Madam Anis Haroon, renowned women's rights activist and member of National Commission for Human Rights, Pakistan. I am pleased to inform you that today in this seminar, we have significant representatives, including the chair of anti-harassment committees and senior representatives from 18 different public and private universities of Karachi, significant figures from Sindh Human Rights Commission, Aurat Foundation, Department of Law, APWA, and representatives of media and professional organizations are gathered. This seminar is also being broadcast live on YouTube and Facebook channels. Without further ado, I would like to invite our Honorable President, Madam Shehnaz Wazir Ali, on stage for a welcome note. Madam Shehnaz has an illustrious career as an educationist, development policy specialist, and women's rights activist. She has been associated with Zabist for over a decade now. Ladies and gentlemen, please welcome Madam Shehnaz Wazir Ali. Thank you very much, Harim. Bismillahirrahmanirrahim. I am particularly pleased to be here today to welcome our very special guests, Ms. Fauzia Waqar, who's a development specialist, essentially, but she has many, many other talents and a great deal of knowledge, and today occupies the very high office of Federal Ombudsperson on harassment at the workplace. I'd also very much like especially to welcome Ms. Anis Haroon, who's a rights activist. Dr. Nigat Shah, why don't you come right here in the front? And I can hardly think of anybody who does not know Anis Haroon. She's a writer, she's a poet, but most of all, she's a crusader, and she's a brave and courageous woman who has stood up against all odds to speak up for the rights of women and for human rights. So today we have two very powerful speakers, both women, and women who have indicated through many decades of their life what good understanding, clear commitment, and the courage to stand for what they believe in, what it can do, because it can bring a change. So here we are today with representatives of about 17 to 18 universities here, and I'm very pleased to welcome each and every one of you. This morning, Ms. Fauzia Waqar was, I think, 2 days ago at Karachi University, where a similar session on awareness on the Act, which is Protection Against Harassment at the Workplace, was discussed. And today we have here several other organizations, including the Commission on Human Rights, for Sindh, representative of Aurat Foundation, also several professional organizations, and faculty members and representatives from other universities, and the chairs of the anti-harassment committees. So let me throw a little bit of light on the historical journey here. I think it's always interesting for students, if they want to study the history of law. How do laws come about? Why are laws drafted? What is that passage of drafting a law? And then, of course, presenting it, lobbying to get it passed, then it gets passed, and the bill is converted into an act, and then we have issues about implementation. But I want to go back even further. How is it that a particular political party or
or a particular interested group of people's representatives sitting in the national assemblies, as well as in the provincial assemblies, think of lobbying for a law and getting it passed. Why in a particular area? So for a long time, we've been talking about universal rights, human rights, women's rights, the rights of labor, the rights of children. But this is very specific to rights in the workplace. And this discussion actually goes pretty far back. It goes back about 24 years, to the early 2000s, when the women's rights groups, in fact, Anis Harun will talk about it, I think it goes back even into the 90s, when the Charter of Demand for Women was further clarified. It was first presented during General Ziaul Haq's time in the Women's Action Forum, articulated the different rights, the social, economic, political, cultural rights of women in Pakistan. And subsequently, these rights became more and more refined and sharply focused. So it was in the 90s that the discussion on rights at the workplace and the harassment that women suffered particularly came into national discourse. I don't say it came into government discourse, but into civil society discourse. And that discussion then ultimately led, when the assemblies were elected in 2008, to a crystallization, और उन ऐवानों में बैठ के ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो सारी जमातें जिनका ख्याल था और जिनकी कमिटमेंट थी कि औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उन्होंने मिलके सबसे पहले तो वुमेन्स पार्लियामेंट्री कॉकस बनाया, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में 2008 तक वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस कभी नहीं बना था हमारे ऐवानों में. So the Women Parliamentary Caucus was constituted. There was a woman who was the Speaker of the National Assembly. She gave it full support. And then other parties also gave it some support. Some rightist fringe parties did not support it. So you can see that in the Assembly there's a lot of division on rights issues. And in the Women's Parliamentary Caucus, then many weeks and many months and late into the night, a group of about 8 or 9 women worked on various types of women legislation. So that's really where this law, in a sense, was born. And it came out of the Women Parliamentary Caucus through the party, People's Party, and some other parties who co-authored the law and presented it on the floor of the House. So the law was first known as Protection Against Harassment of Women at the Workplace. And it was presented actually as a bill in December 2009. It was passed in January 2010 as an act, and it was notified on the 11th of March 2010. Subsequently, in 2022, it was updated, and some provisions of it were updated. And there are 2-3 things, and I hope Ms. Fawzia Waqar would throw further light on this, but the clarification on the institutions was included. For example, education institutions were not included in the first bill or the first act. And students were not included. And both of these are now subsequently included. And there was no inquiry committee included in that first act. So there has been development. There's been some development stages. I just want to pinpoint one thing here, that while many universities, and I hope most of them, have committees in compliance with the law, we also have the Higher Education Commission policy. And there's a little bit of difference between the Higher Education Commission policy and the law. Not that they contradict each other, but the Higher Education Commission still calls it Protection Against Harassment of Women. And so I think we'd like to hear some clarifications on that from you. We have also been in touch with the chairs of the Protection Against Harassment committees in the different universities. And I hope that after today's session, which is really a very good information, knowledge-based session, and I hope that everyone here, from the faculty to the students, will really listen very carefully, because this is a
very exceptional opportunity for us. I think in Sindh, only 2 universities have been asked to hold such sessions during this period of time. And in a way, we're amongst the first few. So it's a great privilege for Zabis to be hosting this, and it's a great privilege for us to have so many colleagues here, senior people, as well as mid-level faculty representatives, but all those who are in one way or the other involved in this framework in their universities, and to have some members of our advisory board, advisory committee for our law department as well here. So it's very nice to see them. Thank you very much, and I hope that you have a very informative session. Respected audience, it is indeed an honor to have with us Madam Anis Haroon, our guest speaker for today from National Commission for Human Rights. Madam Haroon is credited with relentless service to the nation by raising awareness on women's rights and several other social issues through journalism and social activism. As a seasoned author, Madam Haroon has penned down several impactful articles and a book on women's rights, giving voice and relief to the victims of violence. Ladies and gentlemen, please welcome Madam Anis Haroon. Madam Shehnaz Wazir Sahib, Fawzia Waqar, Sadka, and all other esteemed guests who are present here. देखिए, मैं जो बात करना चाहती हूँ वो कानून के मुताबिक तो आपको फौजिया बताएंगी, जो इससे डील कर रही हैं ओम्बड्स पर्सन हैं कि इनके अख्तियारात प्रोविंशियल ओम्बड्स पर्सन के क्या हैं। लेकिन मैं इस कानून के बारे में ये जानती हूँ कि 2009 से 2012 तक मैं नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन थी, और उसमें शहनाज का बहुत बड़ा रोल था टू कन्विंस मी दैट आई शुड कम टू इस्लामाबाद एंड स्टे देयर। तो मैं 3 साल मैंने वो इस्लामाबाद में गुजारे, और लकीली ये वो पीरियड था जब जो 6-7 लॉज प्रो वुमेन आए हैं वो उसी ज़माने में आए हैं। उसकी एक वजह थी, उसकी एक वजह ये थी कि वहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो पीपल्स पार्टी की थी। बाकी सब जो भी क्रिटिसिज्म बातें हैं वो अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक वुमेन्स राइट्स एजेंडा की बात है वो हमेशा बहुत लिबरल और प्रोएक्टिव रहे हैं, और उनके साथ बहस मुबाहिसा भी हो सकता है, इस पे झगड़ा भी हो सकता था कि ये राइट क्यों नहीं देंगे। दूसरे ये कि जो स्पीकर थी वो खातून थी, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, और एक वुमेन कॉकस बना था जिसका जिक्र शहनाज ने भी किया था। तो वो वुमेन कॉकस भी बहुत सपोर्टिव था ऑन प्रो वुमेन लॉज। तो जब ये कवानीन बनाने की बात हुई तो आप देखें कि पूरा एक सिस्टम था, नीचे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, वैफ की तरह की तंजीमें थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन था, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके डिमांड्स थे, उनके डिमांड्स कॉकस में गए, कॉकस ने वो हमें फॉरवर्ड किए। हमने एक लीगल कमेटी बनाई थी जिसको हेड कर रही थी जस्टिस माजिदा रिजवी। उस लीगल कमेटी ने इस पे काम किया और ये कवानीन बना के पेश किए। तो इस तरह जो 2010 का एक्ट आया था, एंटी हरासमेंट एक्ट, ये उसकी बुनियाद थी, क्योंकि शायद ही कोई इदारा ऐसा था जहाँ से ये शिकायतें नहीं मिली थी, चाहे वो पब्लिक था चाहे वो प्राइवेट था, कि वहाँ किसी न किसी तरीके से औरतों का हरासमेंट होता है। कहीं बहुत सटल होता है, कहीं बहुत ओपनली होता है। और हमारी चूँकि एक अनफॉर्चुनेटली एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है बहुत अरसे से, तो उसको बहुत लाइटली लिया जाता था। हाँ भाई, आपको छेड़ दिया तो क्या ऐसा मसला हो गया, लिबास में कोई बात कह दी तो क्या मसला हो गया, कोई इशारा कर दिया तो इतनी क्या बड़ी बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं एक दफ़ा कराची से इस्लामाबाद सफ़र कर रही थी, तो मेरी सीट वो थी वो जो
डोर्स इमरजेंसी एग्जिट होता है उसके साथ वाली। तो मुझे उसने पूछा, जो वुमन फर्स्ट सीट होती है जब आप एंटर होते हैं, तो उसने मुझे पूछा कि विल यू बी कंफर्टेबल। मैंने कहा हाँ, इट्स ऑल राइट। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो ही गेव मी दैट सीट। तो एक साहब आए, बड़े सूटेड बूटेड, अपना ब्रीफ केस लेके लंबे से खड़े हुए यूँ रखा और कहा कि मुझे यूँ देखा, फिर कहा मैडम आप यहाँ नहीं बैठ सकती। लग रहे थे ब्यूरोक्रेट हैं कोई। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों नहीं बैठ सकती यहाँ, मुझे तो ये सीट दी गई है। तो उन्होंने कहा ये दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो मैंने कहा आपने कितनी दफ़ा खोला है? तो उसमें लोग हंस पड़े, जिस तरह आप लोग हंसे तो लोग हंस पड़े। मैंने कहा, कहने लगी नहीं, बात असल में ये है, उन्होंने सोचा अब इसको इंटिमिडेट तो नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको एक माइंडसेट की बात बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली देखिए मैं बहुत लंबा हूँ ना, तो आई बी मोर कंफर्टेबल, यहाँ लेग रूम ज़्यादा है। तो मैंने उनसे कहा देखिए अगर ये बात आप मुझे पहले कहते ना तो मैं आपको ये सीट दे देती, आपकी सीट पीछे है, मैं वहाँ चली जाती। लेकिन अब मैं नहीं दूँगी, ताकि आपको ये बात याद रहे कि आप आइंदा इंटिमिडेट ना करें ख़वातीन को। और तो ये मतलब एक माइंडसेट है, आई एम सॉरी टू से। तो ये जो हरासमेंट का एक्ट बना था वो इसीलिए बना था कि हमें तालीमी इदारों से भी इधर से उधर से ख़बरें आती थीं कि किस तरह से इंटिमिडेट किया जाता था। और सबसे बड़ी बात फौजिया विल बेयर मी आउट कि ये जो हरासमेंट होता है इसका विटनेस कोई नहीं होता, क्योंकि ये उमूमन जो है ऐसे वक्त में होता है जब आपका और उस शख्स का एक डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन हो। तो वहाँ पे कोई ना तीसरा बंदा मौजूद नहीं होता जो ये आपके लिए एज एविडेंस खड़ा हो सके कि आपका ये के लिए ये हरासमेंट हुआ है। इसलिए इसको साबित करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल हमें जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे उसकी वजह एक तो यही पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं जिससे हम पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं। पूरी तरह इसमें ठीक है बहुत चीज़ें आगे आई हैं और आप बहुत जगह देखेंगे कि आप किसी ने मुझे कहा कि एक अजीब अपहिवल है अगर आप रूरल सिंध में ट्रैवल कर लें कि हर जगह लोग कहीं ना कहीं खड़े आपको एहतजाज करते नज़र आते हैं और अक्सर जो है वो ऑनर किलिंग के ख़िलाफ़ होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इसलिए वो खड़े हो रहे हैं कि ये आप इसको ऑनर किलिंग का नाम दे के आप अगर औरत को मार देते हैं या उसको सज़ा देते हैं और वुमन जिस मर्द का नाम लिया जाता है वो वहाँ से भाग जाता है या आपको मिलता नहीं है, गायब होता है, तो औरत ही पकड़ी जाती है। इसमें जो 1979 में हुदूद ऑर्डिनेंसेस आए थे उनका बहुत बड़ा दखल है, जिसमें ये था कि भाई औरत को पकड़ लिया जाए और वही साबित करे जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया है, वही साबित करे कि उसने ये गुनाह या ये शरारत नहीं की है। ये मेरा ख़्याल है कोई कानून ऐसा नहीं था जिसमें आप गुनाहगार जो इल्ज़ाम लगाता है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसी को आप मज़ीद वल्नरेबल बना रहे हैं। इसमें फिर आगे तब्दीली आई जिसकी बात फौजिया करेंगी। मेरा ख़्याल है 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, फिर 2022 में अमेंडमेंट्स हुई। तो जैसे जैसे माशरा आगे बढ़ा इसमें विमेंस एक्शन फोरम और विमेंस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत दखल है कि वो किस तरह से इसको हाईलाइट करती रहीं, प्रोटेस्ट करती रहीं, बार बार इस इशू को उठाती रहीं। ठीक है 100% इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि मेन स्ट्रीम हो गया है इशू। अगर आज मैं ये कहती हूँ कि मेरा हरासमेंट होता है तो लोग उस पर डाउट नहीं करते बल्कि सीरियसली मेरी बात सुनते हैं। पहले तो ये था लोग कहते थे भाई ये औरतों की आदत है, खामोखा शिकायत करती हैं। अब थोड़ा सा उसको आप चेंज होते हुए देखेंगे। इसमें मीडिया का रोल भी चेंज हुआ है। मैं ये देखती हूँ कि मीडिया ये लिखता था कि अगर किसी औरत ने अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से शादी की है, जो उसका हक़ है, जो उसको रिलीजन भी देता है, जो उसको सोसाइटी भी, हर महज़ब सोसाइटी देती है, और वो उसके साथ चली जाती है अगर उसके माँ बाप नहीं तैयार होते हैं,
तो वो ये नहीं लिखेंगे कि लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी करके अपने शौहर के साथ चली गई, वो ये लिखते थे एक औरत अपने आशना के साथ फरार हो गई। भाई ये क्या बात हुई? आप ये किस तरह की खबर दे रहे हैं और किस तरह का आप। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि मीडिया के साथ भी बहुत इंटरैक्टिव सेशंस हुए, बहुत इनके साथ काम हुआ कि जब हम बात करते हैं औरत की डिग्निटी की, औरत की बराबरी की, औरतों के राइट्स की, फेमिनिज़म की, तो इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद किसी को नीचे गिराना नहीं है, मर्द को भी नीचे गिराना नहीं है, बल्कि हम एक लेवल पे एट पार बात करते हैं कि आप हमारी रिस्पेक्ट करें, हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए राइट्स का कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि मेरे राइट्स अगर यहाँ तक हैं तो मैं ओवर स्टेप ना करूँ ताकि आपके राइट्स के ऊपर हर्फ आए, और आप ओवर स्टेप ना करें मेरे राइट्स पे। तो इसी के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें बिल्डअप हुई है। अब बड़े एक बात चली आ रही है बहुत अरसे से, जो आपको बहुत सी कहीं किताबों में इधर उधर मिलेगी, जो रिलीजियस बुक्स हैं और जहाँ तशरीह वगैरह है, कि मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में women's sexuality is considered threatening and a source of fitna, and hence Muslim men in Islamic State feel the need to control and suppress any form of female mobility, form of presence in the public sphere. देखिए एक अजीब सा कॉन्सेप्ट ये है कि औरत की जो सेक्सुअलिटी है वो एक फितना है, और वो अगर उसकी मोबिलिटी खुली छोड़ दी जाए तो वो जहाँ जाएगी वो फितना फैलाएगी, और मर्द जो है वो उसके चुंगल में या चक्कर में आ जाएंगे, जैसे उनको तो कोई अकल होती नहीं है, और वो जो है इस तरह की बात करेंगे कि वो फिर सही नहीं होगी माशरे के लिए। तो बेहतर ये है कि औरत को ही कंट्रोल करो। ये भी बहुत डिबेट हुई थी, शहनाज आपको याद होगा, कि पर्दे में रहना चाहिए औरत को। तो मुझे याद है कि एक पार्टी के, एक रिलीजियस पार्टी के रहनुमा ने ये कहा था कि ये जो ज़ियाउल हक ने शुरू किया था ना अबाया पहनाना और ये, उन्होंने कहा सिर्फ ये काफ़ी नहीं है बल्कि चेहरे पे भी नकाब होना चाहिए। तो हमने उन्हें कन्फ्रंट किया, हमने कहा चेहरे पे नकाब क्यों होना चाहिए? अगर वो ड्रेस जो है वो कंप्लीट है और उसके ऊपर उसने अबाया भी पहन लिया तो अब वो आपके लिए काफ़ी नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत फ़नी था। वो कहते हैं यू नो women डू इट विद आइज़। ये सारी चीज़ें हैं कि अब ये एक रियलिटी है। मतलब मुझे याद है उस पॉलिटिकल लीडर का भी नाम है, और जिस तरह से उन्होंने आंखें घुमा के मुंह बना के बात की थी वो मुझे याद है। मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहती, परहैप्स ही इज़ नॉट अलाइव टुडे, लेकिन ये कि ये एक कॉन्सेप्ट चला रहा है जिस पे हरासमेंट। अब हरासमेंट एक्ट जो है इसमें सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, ये तो कवर करता है कि अगर आपने किसी को ऊपर से ऐसे इशारे किए हैं, किसी को मेंटल टॉर्चर किया है, और कुछ नहीं तो आप बैठ के किसी को स्टेयर कर रहे हैं, आप किसी के पीछे जा रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, मतलब हर फॉर्म, हर तरीक़ा जो कि आप किसी भी खातून को इंटिमिडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हरासमेंट है। इस कानून का फ़ायदा ये हुआ है कि इसने ज़ुबान दी है लोगों के मुँह पे। देखिए बहुत सारी जो ऑनर किलिंग्स होती थी उसका ये मकसद ये था कि औरत को पीछे धकेला जाए और ये कहा जाए कि भाई ये जो है ना ज़िम्मेदार है सारी बुराइयों की, इसलिए इसको हम पब्लिक एक्टिविटी से बाहर रखें, घरों में बंद रखें। इस तरह की कई बातें हुई। नफीसा शाह नहीं आई, नफीसा शाह ने इस पर बहुत काम किया था ओरिजिनली, जिसमें नफीसा ने बताया था कि उमूमन ऑनर किलिंग की जो बुनियाद बनती है ना वो मटेरियल रीजंस होते हैं उसके, जिसमें मटेरियल बेस होता है उसका कि आपके पास कोई ज़मीन है या आपकी ज़मीन है, किसी ने कब्ज़ा कर लिया, वैसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। आप किसी औरत और मर्द को इन्वॉल्व करें और कहें कि इसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, तो अपनी औरत जो है वो उसके साथ जो होगा वो तो नहीं सोचते, लेकिन मर्द जो है वूमन भाग जाता है और आपको आपकी ज़मीन या आपका हक मिल जाता है इस तरह से। तो एक ये इनडायरेक्ट वे था ऑफ यूजिंग ऑनर किलिंग एज ए मटीरियल बेस। तो ये भी बहुत दिनों तक चला, लेकिन उसके बाद जो कवानीन बन गए और उसके बाद जो है
जो 6-7 कानून आए हैं उसमें औरत का एक स्टेटस बना है सोसाइटी में। मैं समझती हूँ कि अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम कहें कि सेफली औरत जो है हर जगह ये क्लेम कर सकती है कि उसके इक्वल राइट्स हैं और उसे कोई फियर नहीं है। अभी हम इस स्टेज पे नहीं आए हैं, इसमें पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। इसमें एजुकेशन की ज़रूरत है, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें एक और चीज़ है जो मैं इस वक्त बात करना चाहती हूँ कि ये जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होती हैं, इसमें भी ये होता है कि उठा के ले जाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि हमने इसको मुसलमान कर दिया, कलमा पढ़ा दिया। अब उसको पता ही नहीं होता है कि उसने कलमा पढ़ा है या क्या पढ़ा है, मुसलमान हुई है या नहीं है। वो शादी भी हो जाती है और वो सॉलमनाइज भी हो जाती है। तो ये फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि ये जो शादी है इसको नल एंड वॉइड किया जा सके, क्योंकि प्रिजम्पशन ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उस बच्चे का क्या होगा। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म के कंसिड्रेशंस हैं जो साथ आ जाते हैं। इसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि जो एज ऑफ मैरिज है या एडल्टहुड है वो सारे सूबों में एक होना चाहिए। सिंध जो है सिर्फ ऐसा एक सूबा है जो मैंने कहा कि चूँकि वो ज़्यादा लिबरल सोच रखते हैं तो इस वजह से उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया था और ये हमारे स्टेट ने इस पे साइन किया है कि जो एडल्टहुड की एज है वो 18 इयर्स है और ये हमने यूएन की जो है वो उसको माना है। लेकिन दूसरे सूबों में ऐसा नहीं है अभी तक। वो कहीं दोनों की 16 है, कहीं मेरा ख्याल है कि सिर्फ लड़की की 16 है। तो होता क्या है कि अगर लड़की को यहाँ से उठाते हैं, उसे साउथ पंजाब ले जाते हैं, तो वहाँ पे तो फिर वो सिंध के हुदूद से बाहर निकल जाती है। अगर वो 16 साल की भी है तो आप उससे शादी कर लेते हैं, जो जी चाहता है कर लेते हैं और फिर कहते हैं इसने अपनी मर्ज़ी से की है। तो अब वो साबित करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो हुई है या नहीं हुई। लेकिन वक्त बदल रहा है, खुद फैमिलीज़ और लड़कियां इस आवाज़ को उठा रही हैं, जो मेरा ख़्याल है कि हमारे यहाँ कुछ जो केसेस हुए हैं और लोग भी बैठे हैं वो उनके हवाले देंगे। एक वो जो आरजू केस हुआ था उसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इकबाल डिट्ठो यहाँ बैठे हैं, वो आपको इस पे और बताएंगे। तो मैं समझती हूँ कि एज एन एक्टिविस्ट मैं होपफुल ज़रूर हूँ कि इवेंचुअली वो सिचुएशन आ जाएगी जब ये लॉ पूरे का पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमें जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं ना फौजिया, वो ये है कि हम कभी ओम्बड्समैन के पास केस ले जाते हैं तो वो इंट्रा प्रोविंशियल केस होता है, तो उस मामले पे वो भी क्लियर नहीं होते और मेरा ख्याल है कि हम भी नहीं होते कि ये फेडरल ओम्बड्सपर्सन के पास जाना चाहिए या प्रोविंशियल ओम्बड्सपर्सन के पास जाना चाहिए। जहाँ पे वो विक्टिम है हम समझते हैं वो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन जिसने विक्टिमाइज़ किया है वो दूसरे सूबे में है या वो कहीं भाग गया है मुल्क से बाहर। पिछले दिनों ये केस हुआ था जो वो दुबई चला गया था, क्या था। तो उसमें ये होता है कि बहुत मसाइल का सामना लड़कियों को करना पड़ता है। और पिछले दिनों सिंध में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ, ख़वातीन स्टूडेंट्स के साथ ये केसेस हुए थे, बल्कि लियारी में तो एक लेक्चर के साथ भी हुआ था। तो इसमें मसला ये है कि जब तक हमें सोसाइटी की सपोर्ट नहीं हो, जब तक हम ये सोचना बंद ना कर दें कि अगर कोई गलती हुई है तो उसमें ज़रूर औरत की ही गलती है, उसने इस तरह का लिबास क्यों पहना। ये तो आपके एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगर औरतें इस तरह का लिबास पहनेंगी तो फिर मर्द क्या वो है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने, डमीज़ हैं जो उनके, हाँ रोबोट्स हैं। तो भाई ये क्या बात हुई, रोबोट्स तो नहीं है लेकिन अल्लाह ने अक्ल तो दी है ना। और ये तो क्लेम करते हैं हमसे ज़्यादा दी है, हम कहते हैं हमारे बराबर है, लेकिन ये कहते हैं ज़्यादा दी है। चलो अगर उसको भी मान लिया जाए तो आप क्यों आते हैं उनके इस मतलब ये कि आपको कोई कंट्रोल नहीं है अपने आप पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से इसलिए हैं कि हम जो है ना हर चीज़ के लिए अभी भी समझते हैं कि अगर आपने औरत को ब्लेम कर दिया तो मसला ख़त्म हो गया। बात ये नहीं है। बात यह है कि अगर हमें माशरे को संवारना है और वाकई हमें एक वायबल इक्वल सोसाइटी बनानी है
तो उसमें हमें दोनों को बताना होगा कि वो अपने अपने हदूद में रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनका एहतराम करें। देखिए, मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन ये चीज़ जो है ये ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। आप देखें, अब तालिबान के ज़माने में देखें, जो एक केस हुआ था, 2 किलिंग्स हुई थी, जो जनरल सनाउल्लाह की किलिंग, टारगेटिंग और मर्डर हुआ था, उसको तो बड़ा ग्लोरीफाई किया गया। लेकिन मलाला के साथ क्या हुआ? उसको मुल्क छोड़ना पड़ा ना। और अभी भी 2 थ्योरीज दी जाती हैं कि ये सारा कुकडअप था, ये सारा ये था, तो आई थिंक ये माइंडसेट दूर होना चाहिए। मैंने अपने, चूँकि हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम हेयरिंग्स करते हैं, तो मैंने ये देखा कि उन कंप्लेंट्स में, हेयरिंग्स में हम बिल्कुल उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, बस मेरा ख़त्म हो गया, मैं उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां हम उनको सज़ा दिलवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गांव से उठ के लोग आते हैं जो गरीब माँ बाप होते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं नहीं, आप ये केस ख़त्म कर दें, इसलिए कि अगर ये केस उनको सज़ा मिल गई तो हमारा तो पूरा ख़ानदान वहाँ रहता है। वो किसी और बेटी को उठाएंगे, वो भाई की बेटी को उठाएंगे, वो हमारी पूरी फैमिली का जो रोज़गार है वो छीन लेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम सब के लिए ये पॉसिबल नहीं है हम कहीं और उठ के जो है वो सारे के सारे आबाद हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा ख़्याल है कि एक तो जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना, और जो भी राइट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली होना, और जो कोर्ट्स हैं उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट्स अगर इंडिपेंडेंट होंगी तो वो जो सही फैसले करेंगी कि कौन जालिम है और कौन मज़लूम है, और ये जब उनको मालूम होगा कि कोई उनके तरफ खड़ा होने वाला है तो मज़लूम की तादाद कम हो जाएगी और इस माशरे में ज़्यादा अमन और चैन होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Madam Anis, for an enlightening talk. It is now the time to have a keynote speaker. Ms. Fawzia Waqar, Federal Ombudsperson for Protection Against Harassment of Women at the Workplace, Government of Pakistan, is an expert on women's rights and empowerment, recognized widely in Pakistan and globally. As the founding chairperson of the Punjab Commission on the Status of Women, she led policy and legislative reforms to eliminate discrimination and violence against women and placed gender equality at the core of government processes. Previously, she has worked in renowned women's rights organizations in Pakistan for advocacy and research on women's empowerment and human rights. She has also worked with the Government of Canada as an advisor on human rights with the Ministry of Community Safety. I request Ms. Fawzia Waqar to please join us on stage. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Fawzia Waqar. Thank you for introducing me. Madam Shahnaz Wazir Ali, the management and faculty of Zabist University, other colleagues who have joined, Assalamu alaikum. It is indeed a privilege to be here and to speak to a large group of people, and also people who are actively working on an issue which I hope to lead as the federal ombudsperson, which is harassment of women at the workplace. But I am especially grateful, and I'd like to mention over here, to Madam Shahnaz Wazir Ali, not only for giving me this opportunity, but her leadership throughout on women's issues. And like Madam Anis Haroon said, Madam Anis Haroon, Madam Shahnaz Wazir Ali, they have not only been colleagues, they have been mentors. Women whose shoes we'd like to walk in, women who would like to emulate, not only for their advocacy, but also their work ethics, because they do us proud. And I'm very grateful to you all, Madam Anis Haroon also, for that. I'll take this opportunity today not only to talk about the issue of harassment at the workplace, but more importantly to contextualize this entire discussion further. Madam Shahnaz Wazir Ali talked about how the law came about. Madam Anis Haroon talked about the culture and society that we live in and the issues that we are confronted with. But I want to take you, as I was introduced, a little bit to the data also,
to help us understand where do women stand even today. And some of the benchmarks against which we are measured don't give us a very good picture, because Pakistan does fairly poorly, unfortunately, on the human development indicators of women. So if we take a look at World Economic Forum's Global Gender Gap Index, Pakistan unfortunately ranks 143 out of 146 countries. That is very low. We've come up one rank, not because we've started to do better, unfortunately, almost for a decade, but because other countries have slid further down, so war-torn countries have slid further down. On the Women, Peace and Security Index, again, we rank very poorly. It is a 158th position out of 177 positions. And Women's Peace and Security Index not only measures women's empowerment, but how safe do they feel, whether there is rule of law, how women interact with that framework of governance and rule of law. And we are not doing well at all, unfortunately. This is despite the fact that we've done all the right things, starting from the Constitution of Pakistan, which explicitly guarantees equality of all its persons and gives the state a mandate and a responsibility to ensure that this right to equality is implemented in letter and spirit. Article 25, which guarantees equality of persons or citizens, goes further in Article 25(3) to talk about telling the state that nothing will stop you from taking special measures to promote the safety and empowerment and equality of women and children. We have Article 14, which protects the right to dignity, ensures that the right to dignity is not violated for any person. And that right has been not only enshrined in the Constitution, it has been very well interpreted in the Superior Court judgments as well as other courts' judgments to give the women the right not only to work, but the right to work with dignity. We have Article 34 in the Constitution of Pakistan, which talks about ensuring the participation of women in the public life. And those are tools that we have available to us, which we have to take forward. We have the Constitution, we have special laws. You heard many special laws from Madams Shahnaz Wazir Ali and Madam Anis Haroon. In the decade of 2010, as well as continuing today, right down to continuing today, we've had many special laws. Harassment at the workplace is a special law. For the law faculty who are here, they understand the significance of a special law. The special law has overriding powers. So it can override some of the things which are given in other laws, which will probably undermine the rights in a particular sphere. So the harassment law is a special law. Similarly, many amendments have been brought in, which are extremely useful for women. Amendment of 2021 in the Rape Prevention and Protection Act, that not only makes it much easier for a woman to report rape, but gives her that entire ecosystem where she feels more respected, where she does not feel intimidated, which means that there are gender-based violence courts which have been made by the government in 114 tehsils across Pakistan, in every district of Pakistan. There's training of those judges also. A woman, when reporting rape, must be dealt with by a woman police officer. There are provisions for in-camera trials. There are provisions for fielding the questions through a lawyer, so that especially a younger woman who's reporting such a heinous crime as rape does not feel intimidated, which we all do. When, in any case, police is a very intimidating force, and the environment is further extremely male-dominated, so it's very difficult for a person to really present their case, and then the courts also. So these provisions in the law make it much easier for women to report. We have laws on domestic violence. Madam talked about it. Every province in Pakistan has passed a law to prevent and protect against domestic violence. So we have that legal framework very well in place. Unfortunately, implementation is what
brings us at 143 out of 146 ranking in the world. And that is where I think the crux of the matter lies, or that is where the crux of the efforts will also lie. I see today's event as an opportunity to be able to tackle that implementation issue. Because I personally have witnessed that implementation, there are two primary challenges to implementation. One is, of course, the mindset, where even when you have the law, you don't use it, or you don't let other people use it. And that is where, what Madam Anise Saroon talked about, that is where the male privilege at times also comes in, where people are not going to give up. The rich are not going to give up their privilege to ensure or to implement fundamental human rights. Similarly, males will probably not easily and quickly give up their privilege in order to promote the fundamental human right to equality of all women. So if the laws are in there, that mindset, that privilege, वो हमेशा लोगों के आड़े आएगा. So that's fine, because laws are there to deal with that privilege. The second major issue that I personally encounter, and I feel like that is a problem with implementation of most laws, is the lack of awareness of rights. Not only are people unaware of their rights, not unaware of the laws, they are not even aware, they are very seldom aware of the procedures that go along with it. And that leads to inaction, Inaction when you don't know the law, and inaction when you're intimidated by the process. So if these two challenges are simultaneously tackled, I feel a lot will improve. And between the society and that access to right stand the institutions which are entrusted with ensuring the fundamental rights of citizens. And I am very privileged to be a part of that institutional architecture. We have the chair of the Sindh Commission on Human Rights over here, Mr. Iqbal, who's sitting with us. We have a member of the National Commission on Human Rights. Madam Haroon is not just the member of the National Commission on Human Rights, she is also a member, a co-opted member of the National Commission on the Rights of Children. These are special institutions which are guaranteed specifically to go over and above the other procedures to provide that conducive environment to women and children to report. But with that comes my clarification, and I'm going to now move on to the Office of the Federal Ombudsperson for Protection Against Harassment, which has two distinct mandates. One is protection against harassment, as the name of the office goes. It also has been entrusted in 2020 to protect the rights, the property rights of women in Islamabad Capital Territory. Sindh is following the federal law. We don't have that protection of property mandate given to the Ombudsperson as yet, but that's something that I would look to Madam Shahnaz Wazir Ali to promote. KP and Punjab have that additional mandate which has been given to the provincial ombudspersons in addition to the harassment mandate, which means that in our own territorial jurisdictions, women can come to us. Those are specific to women, the Property Rights Acts. Women can come to us. They don't have to go to civil courts when the title to their inheritance or other property is clear. And we can very quickly, very expeditiously, we can get them access to their property rights. Because usually denial comes from families or the person who has usurped the property. It also comes from institutions like the revenue authorities, as well as the legal enforcement agencies which do not protect that right, or which are not compliant. So they can come to us, and I can tell you that even though we have been given 90 days to deal with that complaint, sometimes it can be much faster. Whereas if you go to a civil court, you will spend decades most likely. If you're very, very lucky, then maybe about 2 to 3 years, but you have to be really lucky. Don't count on miracles. And otherwise, it takes many decades to get your right to property. In terms of harassment, we have a similar timeline. Unfortunately, a lot of times, those timelines cannot be met because of issues and challenges with the society at large, with the legal fraternity also, but I'll come to that in a bit.
So just to explain then now the law, because there were some questions also, and I will address other questions. How does it work? The protection of women against harassment at the workplace, despite its title, is not for women only. Any man, woman, or a transgendered person can complain under the law. The name, unfortunately, is misleading, but anybody can complain. And I'm happy to inform you that we have a large number of appeals, less complaints, more appeals, which come to us from men who feel that they have been wrongfully charged or proceeded against in their departmental inquiry committees. So, who can bring complaints to us? My team is going to talk in greater detail about it, but it can be from a government organization, it can be from a private organization. कोई कदगन नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की के खिलाफ कंप्लेंट्स आ सकती हैं हरासमेंट की. Private organization, large or small, incorporated or not, employees can bring that complaint to us. Man, woman, or transgendered person. This law is, I was explaining earlier, or the institution rather, gives a lot of powers to the ombudsperson, derived from, in the federal government, from three sources. One is the law on harassment, and the other one, which sort of adds up to the powers of the ombudsperson, is the Federal Ombudsman Institutional Reform Act of 2013, which guarantees additional powers. So there is a bar on jurisdiction. People cannot appeal to the high courts, for example, against our order, unless, of course, they exercise their fundamental right of a writ petition, but they have to satisfy the ingredients of a writ petition in order to be able to take it to a high court. If I'm too technical, please, I'll unpack this the information in the question answer session for you. So people bring any complaint to us, and then against any order of the FOSPA offices, as an acronym that we use, this office's name, an appeal lies with the President of Pakistan. In the provinces, you have provincial ombudspersons. The appeal lies to the governor of the province. Appeal does not lie with the high courts or any other body, unless they take the other route that I've just explained. Similarly, we have the powers to issue injunctive orders, which means that we can stay proceedings also, especially in property cases, we use it more there. Which is similar to the power of a civil court or other courts, and along with many other powers that which are similar to that of a civil code. So multiple powers in terms of that. Every institution under the law is supposed to have its own harassment committee, inquiry committee, and I see that you're here, so you all are very familiar. For the harassment inquiry committee members who are sitting there, I'd just like to highlight, it has to satisfy the statutory requirements, which is 3 members. If you look at the law, a harassment committee inquiry committee shall have 3 members, one of whom must be a woman. You know, it can be 3 women, but one at least should be a woman. The harassment committee should generally be the first forum of complaint for an organization. If any faculty or student has to report an incident of harassment, we would encourage you to report it to your harassment inquiry committee directly. However, if for any reason there is some reticence or there is some issue that you feel with the credibility of any member, report it, and the member of the committee may be changed. If you still don't repose confidence in the committee, then any person can complain directly to the office of the ombudsperson also. And if you report it directly to your own inquiry committee, an appeal can come to us. If you report it directly to us as in a complaint, then the appeal will go to the president, as I've explained later. Students, as Madam Chanaz also said, are covered. Educational institutions are specifically covered. The team is going to go into details of what were the changes in 2022, which were very, very significant. Home-based workers are covered now under the 2022 amendments. Domestic workers are also covered. I earlier said that
an employer or an organization may not even be incorporated. It doesn't matter. So there's no getting away from this law if it is implemented correctly. The workplace definition has been considerably broadened. You'll understand, which is why the domestic workers and home-based workers are included. Most significantly, again, you'll get to hear more about it. Now, harassment does not have to be limited to sexual harassment, as in before. It is expanded to include gender-based discrimination. Gender-based discrimination, as I'm sure you all know, may or may not be sexual in nature, but it should carry a discriminatory or a prejudicial mindset against any particular gender. So if a man feels that a woman in a position of power usually is discriminatory towards most men, they can bring a complaint to a harassment inquiry committee. Conversely, if a woman feels that a particular male is either discriminatory towards most women or some women because he feels that the other women are willing to go by his mindset or whatever, even then there can be a complaint of harassment under the gender-based discrimination category. And similarly for the transgendered persons. And I am sure that the transgendered persons experience this discriminatory mindset very much so. So if the universities want to take this mandate forward and specifically impart awareness to your transgendered student community, please do so. In fact, I would actively encourage you to do so. There is a responsibility on the employer to do a few things which are required by the statute. You, apart from having an inquiry committee according to the requirements of the law, you must display the code of conduct. I cannot emphasize enough the importance of this little action. The code of conduct in all prominent languages, in all prominent places, so that people, when they are walking about, they can see. And that is, I think, the best way to communicate the rights to people beyond forums like this. They also have to ensure that there is training for the faculty and awareness for others to understand what it entails, what the law entails, and what needs to be done further. I think I am going to end this note on emphasizing on the importance of institutions. And not only, as I mentioned earlier, are institutions like mine and the NCRC and the Sindh and National Commission on Human Rights, those institutions, but also the judiciary has, interestingly, upheld the right to work with dignity of women in seminal cases and I think in a consistent pattern. And I would encourage you to read some of the landmark judgments whereby the scope of the harassment definition has been expanded by Justice Aisha Malik recently in the Nadia Naz review petition case, Justice Mansoor Ali Shah's decisions, Justice Jawad Hassan's, from here also Muhammad Ali Mazhar Saab's decisions also. They have been very useful in expanding the scope of the law on harassment and other laws which guarantee human rights. But finally, I would encourage you to not only report harassment, but encourage others to report harassment and not stay silent. I often say that if we are silent, we are complicit. We have to speak up, otherwise we will be seen to be contributing to harassment rather than just being silent. On that note, again, I thank the management of Zabist and Madam Shanaz Wazir Ali to having invited me and bringing such an august group together. Thank you, Madam. Thank you, Ms. Fawzia. That's indeed an insightful talk. We have a special guest also with us, Dr. Nighat Shah, the Vice Chancellor, Jinnah Sindh Medical University. So, okay, sure. So she also wants to speak a few words, please. Thank you. I'm just a simple OBGYN person, and thank you very much for this very learning opportunity. Thank you, Madam, for inviting me. It's indeed an eye-opener because we hardly know anything about laws. We are just inside labor room most of the time and operation theater. But regarding magnitude of problem, I just wanted to say a few things because I had done two small researches into
harassment. Soon after my fellowship, I worked for a hospital which is at the western periphery of Karachi, bordering with Balochistan. That's the Murshid Hospital, and it's a madrasa hospital. जैसे church hospitals होती हैं इसी तरह madrasa. My paycheck was signed by Darul Tasneef, which is the madrasa there, and I was not allowed to talk about contraception. I was not allowed to do many things, but still it was a very good hospital, and I had a very good opportunity to work in the community and learn so much, because वहाँ माँ की मौत के दरमियान में एक जो बैरियर होता था जन्नत या दोज़ख के दरमियान में, वो हम लोगों का एक सेटअप था, बिकॉज द वे वुमेन यूज्ड टू कम के ऊँट पे बैठ के आ रही हैं और गधे गाड़ी पे बैठ के आ रही हैं. सो वहाँ मुझे लगा कि बहुत सारी जो गरीब औरतें आती हैं और वहाँ फ़ीस वीस कोई नहीं होती थी, कभी कोई 50 रुपए देती थी, नहीं भी देती थी तो कोई बात नहीं था. तो एवरीबडी वॉज कंप्लेनिंग ऑफ पेन, और जब मैं इतना इन्वेस्टिगेशन करूँ और कोई दर्द नहीं आए, कोई अल्ट्रासाउंड क्लियर हो, लैब्स क्लियर हो, मैं कहूँ तुम्हें कुछ नहीं है, तो उस पर वो और उदास हो जाती थी. तो मैंने कहा तुम खुश हो ना, तुम्हें कुछ नहीं है? तो कहती नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन इतना दर्द होता है, चला नहीं जाता, यूं कमर पकड़ के. सो एक दिन एक के मुंह से निकल गया, डॉक्टर साहब इतनी ज़ोर की तो लात पड़ती है, तो कैसे फिर? आई मीन आई हैड नेवर एवर थॉट कि मैं मम्मी नॉट टॉट डोमेस्टिक वायलेंस, वी डोंट लुक फॉर सोशल इश्यूज़. हमारा कैरिकुलम तो ट्यूमर ट्रीट कर लो, कैंसर ट्रीट कर लो, fetal issues, intrauterine ये कर लो, IVF कर लें. I'm an IVF person. I do reproductive endocrinology. So then I did this study. 200 औरतों के ऊपर मैंने एक study की. And to my surprise, in pregnancy, more than 80%, और कुछ को मैंने I think ऐसे ही bias होके exclude कर लिया, were subjected to this. And when I asked women कि why does he hit you, or anybody in the family has a right to hit, ससुर हो कोई भी हो, so कहने लगी, एक ने तो कहा तो मेरा शौहर है डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मारेगा तो पड़ोसन को मारेगा. So you come to know for strange, because they take it for granted. This is a routine, this is a norm, this is a norm. So इस community में जिसमें मैं जाती थी, वहाँ पर जो I think जहाँ ये मसरूर बेस भी है, उसके पीछे वो सारा एरिया है, कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ मैं जाती थी. मच्छर कॉलोनी से लेके उस एरिया तक, बल्दिया और माचकोट, नाउ इट केम टू मी. सो दैट वाज द एरिया. सो बट इट्स जनरली ऑल ओवर. हम सब इतने सो कॉल्ड एलीट अच्छी फैमिली से हैं ना, बट कैन वी रियली वाउच 100% कि वी हैव नेवर बीन थ्रू हरासमेंट? एनीबडी, मैन वुमेन, ऑल ऑफ अस, दिस शुड बी बियॉन्ड जेंडर. कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ फेस किया है, एंड वी रिलेट. And another thing, this was a study in uneducated women, and another study in educated people, midwives. I teach midwives and doctors also, came up with very similar results. और ये लड़कियाँ कमाती हैं, empowered हैं. जो हम कहते हैं कि less empowered में it's okay, but in empowered women also, it's day in and day out. So then there has to be a recognition कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या नॉर्म है. फिर हम नॉर्मल की डेफिनेशन बढ़ा देते हैं. जैसे स्टंटिंग में अब हमने कहना शुरू कर दिया, सिंध का वेदर ही ऐसा है, इतनी गर्मी है तो बच्चा तो स्टंटेड होगा. यू नो, आई एम सो सॉरी. थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम. Thank you, Dr. Nigat Shah, for sharing your valuable input. Respected audience, now Ms. Ufefa and Mr. Alian from FOSPA Sindh are going to share a presentation on the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act 2010. I request them to please come forward to the stage for this presentation. Okay, Assalamu alaikum, all esteemed guests and all the wonderful audience that we have here. So, the esteemed guests out here have already covered most of the parts of the presentation. And so we just quickly rush through the presentation, the important parts that we feel the audience should be aware of. So before we begin with the presentation, there's a short video that we'd like for you to see. And once we're done with the video, we'd ask you a couple of questions.
So what exactly happened in the video? If anybody would like to volunteer an answer. Do we have any volunteers? Yes, ma'am. Excuse me. Maybe she's a subordinate and he's physically harassing her, touching her in an inappropriate way. Exactly. And how do you think was she feeling? Was she welcoming that conduct? Very uncomfortable. She was feeling very uncomfortable. And What do you think that a person should do if he was seeing this or if she was seeing this? like, what's the responsibility on the... That's the, give it a shut up call right there. So, in the video, there are only two individuals involved. Somebody who was harassing and somebody who was being harassed. But what if this incident took place in front of us? Like, what if we were witnessing it? What would be the responsibility on us to report it? To support and report. That's where bystander intervention comes in. Whilst the victim may or may not have the courage to come forward, it is our responsibility to support her, to encourage her so that she can report. Now, that brings us to understand what exactly is harassment and why is it important to have this conversation. Until and unless we don't understand what is harassment, we cannot exactly identify or point out when somebody is being harassed. I believe it is also important to address that harassment is governed by three cultures. One is the culture of acceptance, as Ms. Ma'am Anis Harun rightly pointed out, that बहुत सारी communities में जो होती हैं उधर normalize किया गया है कि harassment जो है women के साथ होता है, इस चीज़ को उन्होंने normalize कर दिया गया है. दूसरा ये है कि culture एक silence का भी है, जो victims होती हैं, they rather prefer to keep quiet rather than disturb the apple cart. तीसरा फिर ये एक आ जाता है कि which is I think shameful for a country that calls itself a civilized, कि एक culture of impunity भी है. Perpetrators जो हैं वो they go scot free, क्योंकि कोई उनको छूट दी जाती है, either they are from a powerful background or not. Also, just to clarify, in the video that we showed, it was a very stereotypical scenario of women being harassed and a male harassing her. That's not what always happens. Our law is a gender equal law, and whilst a victim may or may not be a female, the harasser can be anybody. A complainant can be any person, and so can be the harasser. We are not restricting ourselves to just one gender, since if we go by that, then all the females in this room would be potential victims, and all the males would be potential harassers. So, harassment at the Workplace Act is a gender equal law. And क्योंकि harassment जो है वो किसी एक gender से limited नहीं है, anybody can be the शिकार हो सकता है harassment का, कोई भी victim हो सकता है, क्योंकि harassment एक pervasive है, कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसी industry नहीं है जो इस चीज़ से immune हो, वो चाहे पुलिस हो या departments हो उनके या court हो या offices हो, banks हो, जिधर किधर हमें ये harassment देखने को मिल रही है. So, honestly speaking, it gives me immense pleasure to define this act in front of the people who have legislated it and in front of the people who govern it. So, before this act came into being, this act has been promulgated, as Ma'am Shanaz pointed out, in 2010. Before this was enacted, how harassment was being dealt with was under Section 509 of the PPC. But what we normally see is that criminal courts are time consuming. Legal processes take time. And so often a victim who was going through the trauma of workplace harassment, she had to go through a long ordeal to get justice, which is why the legislators felt the need to have a special law in place so that workplace harassment can be dealt with in a swifter manner. अच्छा, क्योंकि as मैम फोजिया pointed out, we have two mandates, एक property rights का है, दूसरा harassment का है. So FOSPA में हम क्या करते हैं काम, वो मैं आपको बता रहा हूँ. We provide swift justice. हमारे जो उमूमन जो cases होते हैं within 90 days harassment के हम complete करते हैं, लेकिन कुछ technicalities की वजह से या lawyers की वजह से वो prolong हो जाते हैं. दूसरा ये है कि
वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट जस्टिस। जैसे कोर्ट्स में फ़ीस होती है केस दाखिल करने की, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें फ़ीस ली जाए। इवन हम जो कॉपीज़ होती हैं वो पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। फोस्पा की लीगल टीम होती है जो आपको गाइड कर सकती है प्रोसीजर के थ्रू। जो कंप्लेनेंट हैं, जो लेमैन हैं, उनको पता नहीं है प्रोसीजर का, हम उनको लीगल काउंसलिंग भी देते हैं। Now, harassment definition. In the video that we saw, there were basically types of harassment. Verbal, him catcalling her, saying things to her. Visual can be probably a harasser showing any images or videos or playing something like that in the office premises, in the workplace premises. And it can be physical. Somebody touching you, stroking you, patting you in an inappropriate way, or a conduct that is unwelcomed. What is important here is the conduct is unwelcomed. And we need to remember that consent once given can be withdrawn. So it doesn't have to be, for example, you consented to a behavior once, that consent doesn't need to always stand. The moment you withdraw your consent, any behavior subsequent to that is unwelcomed. So also we have, for example, in anybody is creating your workplace, he's making your workplace hostile or intimidating or toxic for you through their sexual conduct. In the definition of harassment, what we actually have to always look out for is the sexual conduct. The verbal, visual or physical conduct has to be sexual in nature for it to come under the ambit of harassment in the 2020, subsequent to 2022 amendment. अच्छा, बिफोर अमेंडमेंट जो हरासमेंट थी वो कन्फाइंड थी टू द सेक्सुअल हरासमेंट, बट आफ्टर अमेंडमेंट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी पार्ट ऐड कर दिया गया है सेक्शन 2H2 में। अच्छा, वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो एक किसी बंदे का प्रिजुडिस्ड या डिस्क्रिमिनेटरी माइंडसेट हो टुवर्ड्स दी होल जेंडर, फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उसको जॉब नहीं दी जा रही बिकॉज दे बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर वो हैं, या पे गैप है, एक वुमेन जो हैं वो सेम ही काम कर रही हैं मेल वाला लेकिन उनकी पे कम दी जा रही है उनको, या किसी मेल को सिर्फ क्लरिकल टास्क ही दिया जा रहा है उसकी कैपेसिटी के अंडर। दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर जेंडर से ताल्लुक़ रख रहा है उसको वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। What is important to understand is that harassment does not have to be a recurrent set of events. It can be one single incident that makes you feel uncomfortable. It does not have to occur consequently or again and again for you to establish that you've been harassed. Even one single conduct that makes you feel uncomfortable, that suffices harassment. अच्छा, जैसे किसी को जो कोई बंदा है वो डर रहा है, उससे काम नहीं हो रहा, तो उसे कह देंगे कि भाई तुमसे काम नहीं हो रहा, बहादुर नहीं हो, तुम चूड़ियाँ पहन लो, देयर बाय इंडिकेटिंग दैट जो पर्सन चूड़ियाँ पहनता है वो बहादुर नहीं है, वो करेज नहीं है। जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं वो करेज नहीं है। ये दिस शोज दैट देयर इज अ प्रिजुडिस्ड माइंड सेट ऑफ दैट पर्सन, और उसका एक पूरे जेंडर को लेके एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है। ऑल्सो रिटेलिएशन, अगर कोई इनकार कर देता है, कोई बॉस जैसे किसी को कह रहा है एम्प्लॉय को कि इफ़ यू मेक मी हैप्पी मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा, एंड इफ़ दैट एम्प्लॉय रिफ्यूजेज, उसकी कोई भी सेक्सुअल एडवांस को वो रिफ्यूज़ कर रही है और उसके नतीजे में, उसके कॉन्सिक्वेंस में उसको कोई डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या उसको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, तो वो रिटेलिएशन है। एंड द एक्ट ऑफ रिटेलिएशन इटसेल्फ इज़ अ हरासमेंट। और हमारा एक्ट स्पेसिफिकली बार कर रहा है कि कोई भी रिटेलिएशन नहीं होगी आइदर फॉर द कंप्लेनेंट या कोई विटनेस हो, वो ला रही है एज अ विटनेस कोर्ट में, तो उसके खिलाफ भी कोई रिटेलिएशन नहीं हो सकती। अच्छा, complainant as Ma'am Fauziya discussed कि any person can bring a complaint who is aggrieved from the act of harassment. harassment जो है वो एक लिमिटेड नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी के साथ भी harassment हो सकती। 2022 में जो वाइड कर दिया गया था कंप्लेनेंट के स्कोप को, पहले था कि एनी मैन और वुमेन कैन ब्रिंग अ कंप्लेंट, बट अब एनी पर्सन को कर दिया गया है इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स एज वेल। एक और अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट है, कंप्लेनेंट की डेफिनेशन को वाइड कर दिया। दूसरा, जो फॉर्मर एम्प्लॉई है उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जिन्होंने खुद रिज़ाइन किया है, वो भी कंप्लेंट ला सकते हैं जो उनके साथ जब हरासमेंट हुई है पहले। या जो माइनर्स हैं, स्कूल्स में हैं, अगर उनको सेक्सुअल हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है
तो उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके गार्डियन हैं वो कंप्लेंट ला सकते हैं, क्योंकि अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल्स जो हैं या इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन के अंडर फॉल कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंडर फॉल कर रहे हैं। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो कॉरपोरेटेड हो या इनकॉरपोरेटेड हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्पेसिफिक टर्म, वर्क प्लेस ब्रॉडर टर्म हो गया। कोई भी आपकी जो वर्क प्लेस, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वर्क प्लेस जो आपकी है वो कन्फाइंड हो एक 4 दीवारी तक। आप जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो ही सिर्फ आपकी वर्क प्लेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप पिकनिक पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, just because that perpetrator has access to you by virtue of your workplace, तो वो workplace आपकी count हो जाएगी। So basically, workplace की since we've elaborated the definition in 2022, so it also involves studios, gymnasium, courts, and basically any geographical area जो आपके work related activity के ambit में आ रहा हो, which is why if you all can recall the Misha Shafi case, the reason why it fell under workplace harassment was because studios and performance facilities, concerts, they all satisfy the definition of workplace. एंड 2022 की अमेंडमेंट में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, स्टूडेंट्स आ गए, इनका स्कोप एक वाइड कर दिया गया, कंप्लेनेंट की हो गई है वर्कप्लेस की डेफिनेशन में। So employee, this is subsequent to 2022. Employee की definition में we have freelance employees working on whether they are being paid or not, volunteers, apart from the contemporary employees that we have, they can be working on implied or express contracts, daily wages people, even students. As Alian pointed out that students, educational facilities have become a definition of workplace. So by that definition, students can also be employees. And home-based workers, as ma'am has already pointed out, that our act also deals with home-based workers and interns. अच्छा, एम्प्लॉयर जिसके पास भी हायरिंग या फायरिंग की पावर हो या हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द वर्क या मैनेज कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आ रहा है। या जो आपका कोई भी काम है वो ओवरसी कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लुक आफ्टर कर रहा है, that is the employer. It doesn't have to be an organization. For example, I believe a lot of us might be having domestic workers, domestic help. So since we are overseeing them, we are responsible for supervising them. So by that definition, we are the employers, and those workers, those helpers are our employees. अच्छा, एम्प्लॉयर क्योंकि डिस्कस कर लिया, अब जो हमारा लॉ है वो एम्प्लॉयर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद कर रहा है। सेक्शन 11 ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्पिक्यूअस जगह पे, प्रोमिनेंट जगह पे कोड ऑफ कंडक्ट प्लेस करे। पर्पज़ उसका ये है कि उनको पता हो कि हरासमेंट कमेटी इन प्लेस है उस इदारे में, उस इंस्टीट्यूशन में, और उस कमेटी के मेंबर्स कौन हैं जिधर हम अपनी कंप्लेंट ले जा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंक्वायरी कमेटी की जो फॉर्मेशन है, 3 मेंबर्स उनमें होने चाहिए, एंड उनमें से एक जो है वो खातून का होना ज़रूरी है, जस्ट फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। दूसरा ये है कि अगर कोई भी जो प्रोविज़न है उसको फॉलो नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, इंक्वायरी कमेटी नहीं है फॉर एग्जांपल, या तो उस पर 25,000 मिनिमम एंड डेट कैन गो अप टू द 1 लाख, उस पर पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। Now, inquiry committee, I believe Ma'am Fawzia has already covered, but I just reiterate, it has to be 3 members at all times, one of which has to be a woman. And out of those, one has to be a member of senior management, and the other has to be a representative of employees. So these 3 members have to be there on the inquiry committee at all times. And that inquiry committee has to be notified. The employees of that organization need to know that who's part of the inquiry committee and who can they approach, for example, when they get harassed. Also, if the organization cannot decide upon any member के कौन सा रखना चाहिए, या तो वो बाहर से भी किसी member को वो रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं inquiry committee का member. And there's a penalty if an organization fails to formulate an inquiry committee. I believe a lot of people out here are representatives of the inquiry committee. So in case, we are happy that there are representatives, but in case an organization does not have an inquiry committee in place, they can be penalized from 25,000 to 1 lakh rupee.
The procedure for holding an inquiry is very similar to the procedure before the ombudsperson. So we just reiterate that when we get there. अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चीज़, एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो इंटीरियर सिंध से हमारे पास आती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रांस प्रोविंशियल होती है, वो हमारे अंडर फॉल करती हैं। ज़ेबिस्ट आई बिलीव कि सिंध के अलावा दूसरे प्रोविंसेस में भी इनके इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एक क्लेरिफिकेशन ये कि ज़ेबिस्ट विल फॉल अंडर द फोस्पा, उनकी जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो फोस्पा में आएंगी। आइदर दे गो टू द इंक्वायरी कमेटी ऑफ द ज़ेबिस्ट और दे कम टू द फोस्पा। ओके, ओके। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जो इंटीरियर से आ रहे हैं तो उनके लिए एक फैसिलिटी ये भी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हम उनको टेकअप कर सकते हैं। दूसरा, अच्छा, कंप्लेंट फाइल करने के हमारे पास 4 मोड्स हैं। एक तो हमारी हेल्पलाइन के थ्रू रिसेंटली वो लॉन्च की गई है 03444367 आप उस पर कॉल करेंगे, यू विल बी कनेक्टेड टू आवर रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। आप कंप्लेंट कॉल पर हमें दाखिल कर सकते हैं आपकी जो कंप्लेंट होगी। दूसरा तरीका है ऑनलाइन मोड, आप हमारी वेबसाइट www.fospa.gov.pk fospa.gov.pk तो आप उस पर भी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। तीसरा और चौथा मोड वो ही कि आप बाय पोस्ट या इन पर्सन आके भी कंप्लेंट अपनी दाखिल कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लेंट में कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स हों आपकी, जो भी वाक़यात हुए हैं, जो आपने नोट की वो, विटनेसेस आपके कौन कौन से हैं, अक्यूज्ड कौन है, आप किनको नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली वो मेंशन होना चाहिए। और दूसरा ये कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिन पर नोटिस जा रहे हैं, उमूमन ये होता है कि अक्यूज की डिटेल्स पता नहीं होती, तो उसमें ये होता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, तो आप हमें वो भी बता देंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो नोटिस चले जाते हैं। Just to cover that, at times, since harassment does not happen very publicly, it most of the times happens behind closed doors with no witnesses and no evidences. So it is important that the moment you are being harassed, you confide into somebody that you trust. Now we'll just wrap up. We've covered this. Ma'am, Hualian did. Yeah. So procedure, we just, if ma'am just allows me, I'll just cover the procedure. We have this standee that I bring forward. This basically covers, since we've already said that our procedure, our complaint mechanism has to, basically complaint has to be disposed of in 90 days. This is what happens in 90 days. From the time that the complaint is registered to their preliminary hearing, their notices, written reply, rejoinders. At this stage, at any of this stage, if the accused fails to show up, we basically send them 3 notices, and even if then they do not show up, we have the right to go ex parte. So we have ex parte proceedings then, and if the accused has failed to show up, if he does show up, then we have the stage of evidences. Cross-examination of accused and complainant and their witnesses, and in between, and during this entire process, our 90 days ideally are completed. And after that, for example, if somebody is not exactly happy with our decision, they have the option to file an appeal before the president. If you're not happy, if you're not satisfied with the decision of your inquiry committee, you can file an appeal at FOSPA. And if you're dissatisfied with the decision of FOSPA, you can file an appeal at the President's Secretariat. So our penalties are basically divided into 2 categories. Major penalties and minor penalties. Minor penalties में हमारी withholding आ गई, उसका promotion हम रोक सकते हैं for a specific time period, या censure हो गया. या major penalties में हमारी उसका grade हम lower कर सकते हैं. For example, if 18 grade का officer है, 16 grade पे कर दिया उनका, या service से हम remove कर सकते हैं. दूसरी major ये है कि dismiss कर सकते हैं service से. अच्छा, removal और dismissal में एक ये minor सा फ़र्क ये होता है कि removal जब होती है service की तो वो उस जगह पे कहीं उस जगह पे apply कर सकता है अगर दूसरी पोजीशन आ रही है. डिसमिसल में वो अप्लाई नहीं कर सकता. दूसरा ये है कि अगर डॉक्टर है, उसका लाइसेंस है या लॉयर है, तो हम लाइसेंस भी उसका सस्पेंड कर सकते हैं या फ़ाइन हम इम्पोज कर सकते हैं, एंड वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर. So there's no time limit to file a complaint before FOSPA. You can at any point in time file a complaint, but that is subject to reasonable time limit. So that just brings us to, we really did not need that, we're done. So that just brings us to the end of our presentation, and we'd be open for the questions.
अच्छा, ये QR कोड है, अगर कोई स्कैन करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे कंप्लेंट पोर्टल पे. सो इफ समवन वांट टू स्टार्ट. Thank you so much, Team FOSPA, for sharing your presentation. Now, ladies and gentlemen, the floor is open for your queries. I request our esteemed speakers, Ms. Fauzia Waqar and Ms. Anis Haroon, to kindly come on stage and be seated for the question-answer session. My question to Ms. Fauzia Waqar. Ma'am, it is normally seen that employees in public sector tend to be more proactive in reporting incidents of harassment at workplace as compared to those who are in private sector. What measures should be taken by private sector organization to foster a culture where employees feel empowered and encouraged to speak up and report incidents of harassment? First of all, I'm happy to inform you that we get, I think, more complaint from the private sector than we get from the public sector, despite the fact that the public sector guarantees the right of work, So there's a lot of security. However, having said that, in any organization, I feel like sending the message loud and clear that there is zero tolerance for harassment will help. For which, the first thing to do is to know that there is an inquiry committee and all. Take strict action in the inquiry committees. Again, very happy to share that sometimes organizations have been so proactive and they've taken such stringent action against the harasser. I'll give you a recent example where here in Sindh, we got a complaint from a student. It was an anonymous complaint and we don't proceed on anonymous complaints, but a student said कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, एक assistant professor हैं जो ज़्यादती कर रहे हैं और मैं खुदकशी कर लूँगी अगर जवाब ना दिया गया. So because of the urgency of the matter, वो हम territory और उसमें नहीं गए, we spoke with the university vice chancellor, whichever it was over here in Karachi actually, and we informed them of the issue and they urgently moved that person, immediately. Now that kind of an action sends a very clear message that the university has zero tolerance for harassment. And of course, the more women you have in an organization, probably greater the chance that they will not put up. जब कम औरतें होती हैं, वो critical mass नहीं होता, तो डर भी ज़्यादा होता है और लोग complaint नहीं करते. Thank you. Any other question? This is Dr. Afshar Rabab Saeed. I am Additional Secretary, University and Boards. So, ma'am, it's a mind-blowing seminar. I must appreciate, and we are going to invite you, and I hope you'll accept our invitation for the secretariat level seminars also. I just told my secretary that men are more needed in such seminars. Rather, we women are sent all the time, but I think they are also needing it much more than us. So my question is regarding, I'm more concerned about the consequences, the after effects if a woman, comes out and kind of outspeaks about the harassment. Does the law cover this in any way? What are the awareness strategies for this? I mean, I've seen women totally destroying their careers if once they are out, and nobody wants to take them as a secretary or as a civil servant after that, or even in the educational institutions. They are labeled as troublemakers. Do we have any coverage for this? Thank you. Unfortunately, that is a problem. पहली बात तो ये होती है कि whenever a woman reports harassment, there is a tendency to blame her. कि she must have done something, इसके कपड़े ख़राब होंगे या इसका चक्कर चल रहा होगा, तो वो तो एक mindset है ही. But once she reports, the law provides her protection in the pendency of the complaint. During that, abhi mere colleagues ne bataya, retaliation, we have a zero tolerance for retaliation. And in almost every case we get retaliation. We take stringent measures to the point कि अगर transfer भी कर दिया है ना, तो we revert her to her original post because nothing like that is permitted. And I am again happy to share कि बहुत senior लोगों की dismissal from service भी हुई है. तो अभी भी हमारे पास बहुत हाई लेवल केस चल रहे हैं जिसमें हमें कोई देयर इज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन अस कि हमने किसी साइड को फेवर करना है. आई हैव so far I'm encouraged that I have considerable autonomy. After the complaint ends, decision हो गया है,
उसके बाद अगर कोई एक्शन है, she has the ability to reopen, she has the ability to complain again. We will still bring it under the retaliation measure also and take care of it. Thank you, ma'am. And I'm happy to join one of your seminars or any session that you want to. Okay. Yes, do we have another query? Ji, Sure. Assalamualaikum. Let the gentleman complete the question. Sayyid Masha, so happy to have you in the city. I wish I'd have known earlier that you're visiting. I think one of the interesting questions from your discussion earlier was on jurisdiction, so I wanted to ask one along that. You mentioned that an unregistered or a registered organization can also fall into the ambit. Now, if I ask a question, because recently this Afghan refugee crisis has come to foray. Now, there's a lot of unregistered people, particularly, let's say, amongst the Afghan. And here in Karachi, we have a big Bengali community as well. And sometimes employers use that to their advantage and use harassment as a tool in that. Does FOSPA or this law cover those type of people as well? Can they use the mechanisms available in FOSPA under this law for some sense of protection? I guess that's my question. Ji Muaz, I think the basic ingredient would be whether an employer-employee relationship exists of some sort. We've even taken cross-organizational complaints where employee is from one organization, employer is from another, where we have the ability to impose penalties which will be implemented. In the case of Afghan refugees or in the case of the Bengali community, a lot of other factors will also come into play, various other legislations will come into play, but if there is an established employer-employee relationship, FOSPA or the provincial ombudsperson, he will also be able to take, they should be able to take cognizance of it. Okay. So we have Chairman Sindh Human Rights Commission, Mr. Iqbal Ahmed Detho Saab. Sir also wants to have a question, please. So can we have a mic over? Yeah, sure. Thank you, ma'am. Thank you, Zabis, for the invitation, and it's always a pleasure to listen, Madam Fozia and Madam Anis. I have just one addition because all the commissions like Sindh Human Rights Commission or National Human Rights Commission, they are called the National Human Rights Institutions, and we are the sub-national human rights institutions. Basically, we are the non-judicial mechanisms of the redressal. Adding to that, the subject which we are having today, it has the two aspects. One is the civil nature matter and other is the criminal liability nature as well. तो एक तो ये है कि जब भी I think one of the participant told that जो 509 है वो that is of the criminal nature because the Pakistan Penal Code that defines any offence which is criminal in nature. तो workplace, public place, or any private place, if any harassment issue takes place, that is the cognizance of the police. So that is one clear कि Pakistan Penal Code के section 509 or other related sections, modesty of a woman, they bestows the cognizance on the police. Coming, जो provincial federal law है, but इसमें अभी when I was coming here, I was seeing the data of the Sindh Human Rights Commission, which is also faced with this thing. अब बहुत से मैडम duplication and replication की issues आ रहे हैं. Sindh Human Rights Commission is having meeting on the 26th of this February. I think we had also sent invitation to your regional office here, Karachi. कि some of the cases when comes, तो उनकी सिविल लाइबिलिटी नेचर अपनी जगह और फेडरल इंस्टीट्यूशंस की नेचर है. तो वी विल बी हैप्पी इफ देयर linkages between the provincial and federal commissions are established so that we can refer those cases which are your jurisdiction. एक तो ये है. More other important, I think कि एक और law है provincial statute पे, that is called the Sindh Domestic Violence Prevention and Protection Act 2013. And I must tell the audience that this law is the most progressive law. Even all the
domestic violence prevention laws in other provinces. Even Punjab वाले की jurisdiction सिर्फ women है, जो सिंध डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013 है, उसमें मेल, उसमें फीमेल, उसमें ट्रांसजेंडर और एनी पर्सन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, अगर वो सर्वेंट भी है, डोमेस्टिक सर्वेंट भी है, ड्राइवर भी है, दे कैन कम इनटू दैट एम्बिट एज वेल. तो उसमें न्यू ऑफेंसेस क्रिएट किए गए हैं. स्टॉकिंग का उसमें न्यू ऑफेंसेस है, उसमें अपार्ट फ्रॉम दीज साइकोलॉजिकल वायलेंस और ये सारी जो चीज़ें हैं which constitutes the domestic violence in addition to the PPC के. तो I will urge the audience के though its implementation is having issues like the उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो कम दे रहे हैं, रिलीफ ऑर्डर कम दे रहे हैं, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, वी मैडम एट द सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन आर ट्राइंग कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वी हैड टू वर्क विद द वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कि उनकी जो बजटरी अलोकेशन है वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के लिए, वुमेन प्रोटेक्शन कमेटीज़ के लिए, उनकी जो अदर एंसिलरी सिस्टम्स है. बट रिसेंटली स्टिल मैडम फौजिया के साथ हम वी विल बी हैप्पी टू वर्क कि इसको लॉ को हमें प्रोविंशियलाइज भी करना है. और दिस अंडर दिस लॉ वी आर हैविंग अ कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन. आपकी फेडरल ombudsperson भी है और इधर प्रोविंशियल वाला भी है. सो अंडर व्हाट लॉ दे आर बीइंग गवर्न, स्टिल दैट इज दी. इस पे लॉ डिपार्टमेंट ने एक मीटिंग रखी है अगले हफ्ते. सो वी विल सीक योर गाइडेंस एंड अदर एकेडमिक्स एज वेल. सो विद दिस थिंग जो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी इंडिविजुअल और कलेक्टिव ग्रीवेंसेस को डील करती है, बट प्राइमरी जो जुरिसडिक्शन हमारी नहीं है, एंड वी रेफर टू दी अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल. But I need to say that there is a need for some policy brief or a background paper on all the intricacies around these things. जो even Justice Mushir Alam ने जो जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, जहाँ जो अभी चीज़ें हुई हैं, और सिंध में particularly in private sector or both public sector universities में जैसे मैडम अनीस ने कहा कि there is a lot of issues. और अभी भी सिंध हाई कोर्ट में एक जजमेंट आई है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर पे भी. सो वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट थिंग एंड आई होप टू एंगेज विद द एकेडमिया इन दैट सेक्टर. So since we are running short of time, I think we now are proceeding towards the end of this seminar. Thank you so much, the speakers, for answering your queries. I would request you to please stay on the stage for a little while. Now I would like to call Ms. Sayyada Jabeen Jahazeb, the Chair, Anti-Harassment Committee, Zabist University, Karachi campus, for her closing remarks. Thank you, Harim. Assalamu alaikum, everyone. I would like to express my sincere gratitude to all of you for participation in this awareness seminar. I extend special thanks to our speakers, Ms. Fawzia Waqar, Federal Ombudsperson for Protection Against Harassment at Workplace, for her keynote address, Mrs. Anis Haroon, Member of National Commission for Human Rights, Pakistan, for sharing their invaluable insights on the harassment and discrimination that our women face in the society. I'm also thankful to the Vice Chancellors, Chairs of Anti-Harassment Committees of public and private sector universities, professionals from education boards, Women Rights Organization, Sindh Higher Education Commission, government officials, Chairman of Human Rights Commission of Sindh, senior management, faculty, staff, and students of Zabist. Zabist University, renowned for its commitment to academic excellence and promoting a supportive community, takes pride in upholding the highest standards of respect and safety for all its members. Our university is not merely an institution of learning, it's a place where diversity is celebrated and the rights of every individual are protected. As the chair of Anti-Harassment Committee of Zabist University, I want to assure you that our commitment to combating harassment is constant. We are here to listen, support, and act against any instance of harassment that may occur within our university. Together, let us reaffirm our commitment to promoting a harassment-free environment at all our institutions. I would also appreciate the contribution of my team members
Anti-Harassment Committee, our focal persons, and our appellate body, Dr. Riyaz Sheikh, Ms. Wajiha Javed, Mr. Abdul Fateh Barohi, whose efforts were instrumental in the success of this seminar. Thank you. Thank you, Ms. Jabin, for your remarks. I would now request President Madam Shehnaz Wazir Ali, our respected Vice Presidents Madam Nasreen Haq and Mr. Imtiaz Qazi to please come on stage and present the token of appreciation to our honorable guests. Ms. Fawzia Waqar to receive her memento. I request our speakers and management to please stay on the stage for a group photograph with the entire harassment committee. Okay, sure, please. Sure. Please. The entire harassment committee is requested to please join on the stage. Madam, you please stay for a group photograph. Sir, please. Yes, sir. The management. Yeah, sure. The team FOSPA, you are also requested to please join for a group photograph. No, no, I'm fine, I'm fine. Thank you so much, everyone. You are requested to be seated. Thank you so much, everyone. You are requested to be seated. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of today's session. I am grateful for your kind presence and participation in this awareness seminar today. While the faculty, students, and staff may leave, I request our distinguished speakers and guests to please proceed to the boardroom for refreshments. Thank you so much and have a great day.